Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level recruitment exams. And here you can see some special features of this series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO, clerk, SSC, GK, SSB, UGC NET, police, railway and in other state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus और मैं students से request करता हूँ कि वो revise करें each chapter, each path at least twice and they can also practice MCQs, PYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन दी टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. And earlier हमने already discuss किया है practice set 1 in which we had discussed at least 50 questions that are important from your exam point of view. अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो is available there, आप जाके उस वीडियो को also देख सकते हैं. And today this will be our practice set 2 in which we will also discuss 50 questions that are important from your exam perspective. So let's start with the question number 1. The first question is, first supercomputer developed in India was, your options are 1 Param, 2 Aryabhatta, 3 Buddha and 4 Cray 1. The correct answer is option 1 Param. Explanation. फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसको डेवलप किया गया इन इंडिया दैट वाज पाराम 8000 जिसको क्रिएट किया बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग दैट इज CDAC पुणे एंड इसको स्पेसिफिकली लॉन्च किया गया इन द ईयर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विजय पाटकर. एंड जो पाराम है स्टैंड्स फॉर पैरेलल मशीन and it basically marks the India's entry into the global supercomputer arena and it also reduced the dependency on foreign technology. ठीक है. Let's also talk about other options. Like option 4 Cray 1 जो है it is incorrect because it is also one of the powerful early supercomputer but इसको develop किया गया in the United States by Cray Research in the year 1976. Then option 2 Aryabhatta जो है it's also incorrect because it is an India's first satellite जिसको लॉन्च किया गया in the year 1975 rather than a computer. And option 3 Buddha जो है it's also incorrect because it's not related to computer but rather it is only a dictator. Hence जो हमारा option 1 है that is our correct answer. Next question. Which of the following is an example of computer software? Your options are 1 impact printer, 2 console, 3 device driver and 4 OCR. The correct answer is option 3 device driver. Explanation. Device driver जो है it is a software program जो कि allow करता है operating system and applications को to communicate with the hardware devices. And ये जो device drivers हैं they translate high level commands into device specific operations which make sure that कि जो hardware resources है like printers, scanners and keyboards they function properly. ठीक है. Well, if we talk about other options like option 1 impact printer जो है it is incorrect because it is basically a hardware device rather than a software. Then option 2 console जो है it's also incorrect because it is also a hardware interface including keyboard plus display. And option 4 OCR जो है that is optical character recognition it is also incorrect because no doubt जो OCR है it is also a software but it is more about a technology or process rather than a direct example of software like driver. Hence जो हमारा option 3 है that is correct answer. Now let's see next question. Programmers use a variety of dash to communicate instructions to the computer. Your options are 1 programming languages, 2 system languages, 3 high level languages and 4 low level languages. The correct answer is option 1 programming languages. Explanation. Programming languages जो हैं these are basically the formal languages that are made up of set of instructions, rules and syntax जो कि programmers use करते हैं to communicate with the computer and they also enable humans to write code
जिसको फर्दर ट्रांसलेट या जिसको फर्दर कंपाइल किया जाता है इनटू द मशीन लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर फर्दर एग्जीक्यूट करता है। While option 2 system languages जो है it is incorrect because it is a subset of programming languages जिनको mainly use किया जाता है for developing system software like operating systems और device drivers. Then option 3 high level languages जो है it is also incorrect because it is a type of programming language that is very close to the human language like Python, Java, C++ rather than a general category. And option 4 low level languages जो है it's also incorrect because it is also a subset of programming languages including machine and assembly language that are also closer to hardware instructions. Hence जो हमारा option 1 है that is correct answer. Now let us discuss next question. Which of the following displays the content of the active cell? Your options are 1 active cell, 2 formula bar, 3 menu bar and 4 name box. The correct answer is option 2 formula bar. Explanation. In spreadsheet applications like in Microsoft Excel या Google Sheets जो formula bar है it is a dedicated area और bar जो कि display और जो कि allow करते हैं users को for editing the content of the active cell whether it is plain text, number or a formula. ठीक है. Let's also talk about other options. Like option 1 active cell जो है it is incorrect because जो active cell है it basically shows the result of formula or the entered value directly in the grid rather than a formula itself. Then option 3 menu bar जो है it's also incorrect because it basically includes drop down menus like file, edit, view, etc. and it is also unrelated to the cell content display. And option 4 name box जो है it's also incorrect because जो name box है shows the address like A1, B3 or defined name of the active cell rather than it is content. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let's move to next question. A software used to convert source program instructions to object instructions is known as. Your options are 1 compiler, 2 assembler, 3 interpreter and 4 language processor. The correct answer is option 4 language processor. Explanation. Language processor जो है it is a quite general term जिसको यूज़ किया जाता है for any software system जो कि ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्राम्स को that are written in high level language or assembly languages into another form जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर further execute करता है like the machine code. And ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं they act as a bridge between human readable source code and the machine executable instructions. ठीक है. Let's also talk about other options. Like option 1 compiler जो है it's incorrect because जो compiler है it translates entire program at once that is from high level language to machine code and it basically produces object file that can be executed later and it is इसकी जो example है that is C compiler. ठीक है. Then option 2 assembler जो है it is also incorrect because जो assemblers है they convert assembly language which is the symbolic representation of machine instructions into machine code. And option 3 interpreter जो है it is also incorrect because जो interpreters है they translate and they execute programs line by line without generating a separate objective file and it is also slower than compilers but it is useful for scripting languages. Hence जो हमारा option 4 है that is correct answer. Next question. In computers IC chip is used which is made of. Your options are 1 chromium, 2 iron oxide, 3 silica and 4 silicon. The correct answer is option 4 silicon. Explanation. Integrated circuit chips जो है these are the core components of computers, smartphones and all electronic devices. And ये जो chips है these are made from the silicon which is a semiconductor means it conducts electricity under certain conditions and it also acts as an insulator under others. And इसकी जो property है that makes it ideal for creating transistors that are the building blocks of ICs. ठीक है. While you might confuse it with the silica. जो silica है इसको use किया जाता है as an insulator rather than an active semiconductor material. है ना. जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. फोन पे वैलेट
launched by? Your options are 1. Sameer Nigam, 2. Airtel, 3. HDFC, and 4. None of these. The correct answer is option 1. Sameer Nigam. Explanation. फ़ोन पे जो है इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंडियन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जो कि अलाउ करता है यूज़र्स को टू मेक पेमेंट्स, ट्रांसफर मनी, रिचार्ज एंड शॉप ऑनलाइन। एंड इसको फाउंड किया गया इन December 2015 बाय समीर निगम एज इट इज़ को फाउंडर एंड CEO, एंड राहुल चारी एज इट इज़ को फाउंडर एंड CTO, एंड पूर्सिन इंजीनियर एज इट इज़ को फाउंडर एंड रिलायबिलिटी ऑफिसर। एंड फ़ोन पे वैलेट एंड UPI बेस्ड पेमेंट ऐप जो है दैट वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन August 2016। हैंस जो हमारा ऑप्शन 1 है दैट इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a part of central processing unit? Your options are 1. Printer, 2. Keyboard, 3. Mouse, and 4. ALU. I think this is an easy question. You can solve this. The correct answer is option 4. ALU. Explanation. Arithmetic logic जो है it is a core component of CPU. CPU जो है that perform mainly two types of operations including arithmetic and logical operations. ठीक है. While other options जो है they are incorrect because printer जो है it is an output device and keyboard mouse जो है these are the input devices। है जो हमारा option 4 है that is our correct answer। Now let's move to next question। Which of the following statement is wrong? Your options are 1. Windows XP is an operating system, 2. Linux is owned and sold by Microsoft, 3. Photoshop is a graphical design tool made by Adobe, and 4. Linux is a free and open source software. The correct answer is option 2. Linux is sold and owned by Microsoft. Explanation. Linux operating system जो है इसको create किया by Linus Torvalds in the year 1991 and इसको distribute किया गया under the GPL that is General Public License and it is an open source software means इसका जो source code है that is freely available to anyone जो कि कोई भी use कर सकता है, modify या distribute कर सकता है। एंड बहुत सारे इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज़ और जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे बिल्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक उबुंटू, फिडोरा, Debian, Red Hat, but none of them are solely owned or sold by the Microsoft, while other three statements जो है that are true about it। Hence जो हमारा ऑप्शन 2 है that is correct answer। Now let's move to next question। Pointing device includes the following except your options are 1. Mouse, 2. Light pen, 3. Trackball, and 4. Keyboard। The correct answer is option 4. Keyboard। Explanation। Pointing devices जो है these are the category of input devices जो कि allow करते हैं users को to control a pointer or cursor on a computer screen and ये हमें also important देखने को मिलता है for interactive with the graphical user interface, while other options जो है like mouse, light pen, trackball these are all the examples of pointing device, but जो keyboard है it's not an example of pointing device। hence जो हमारा option 4 है that is correct answer। Now let us discuss next question। The term operating system means your options are 1. A set of programs which controls computer working, 2. The way a user operates the computer system, 3. Conversion of high level language to machine language, and 4. The way computer operator works। The correct answer is option 1. A set of programs which controls computer working। Explanation। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट इज़ अ सेट और कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को और जो कि प्रोवाइड करते हैं कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एंड ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर दैट इज बाय कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एग्जीक्यूशन of applications and also the use of hardware components like CPU, memory, storage, input output devices। है जो हमारा ऑप्शन 1 है that is correct answer। Next question। The physical arrangement of elements on a page is referred to as the documents। Your options are 1. Feature, 2. Format, 3. Pagination, and 4. Grid। The correct answer is option 2. Format। Explanation। Format of a document जो है it means how the content is arranged
and presented on the page, which includes its overall structure and organization. And it also determines how information looks by making it readable, attractive and consistent. And इसकी जो key aspects हैं that are font style and size, margins and spacing, text alignment, headings and list, and also the page layout orientation. While if we talk about other options, like option 1 feature जो है it is incorrect है, because जो feature है it refers to a function of software like spell check, mail merge, etc. Then option 3 pagination जो है it is also incorrect because जो pagination है it refers to the page numbering or division of text into pages. And 4 grid जो है that is also incorrect because grid जो है it is a layout tool जो कि help करता है users को with the alignment rather than a format itself. Hence जो हमारा option 2 है that is correct. Now let us discuss another question. Most websites have a main page, the dash which acts as a doorway to the rest of the website pages. Your options are 1 search engine, 2 home page, 3 browser and 4 URL. The correct answer is option 2 home page. Explanation. Home page जो है it is the main or first page of the website जहाँ users जो हैं they can easily check when they have typed a site's main address, and it also acts as a entry point to the rest of the site and जो कि also help करता है users को to navigate easily. Hence जो हमारा option 2 है that is our correct answer. Now let us proceed to next question. Input, output and processing devices grouped together represent an. Your options are 1 mobile device, 2 information processing cycle, 3 circuit board and 4 computer system. The correct answer is option 4 computer system. Explanation. Computer system जो है it consists of 3 main types of hardware components जो कि work करते हैं together to process data, and these include input devices. Input devices जो है इनको हम mainly use करते हैं to enter data, and processing devices जो है they handle computation and control, and output devices जो है they present as result. So together ये जो components हैं they form the information processing cycle including input, output, process and storage. And ये जो cycle है this cycle basically describes the process but together ये जो devices है they form the computer system. Hence जो हमारा option 4 है that is correct. Now let's proceed to next question. Which type of computer could be found in a digital watch? Your options are 1 mainframe computer, 2 supercomputer, 3 embedded computer and 4 notebook computer. The correct answer is option 3 embedded computer. Explanation. Embedded computer जो है it is a special purpose system जिसको यूज़ किया जाता है in the various devices to perform specific predefined tasks. And in digital watch जो embedded computers हैं they handle time keeping, alarm functions and setup counting and other smart features. And ये जो digital watch है this watch operates with the limited hardware, lower power consumption and real time responsiveness. ठीक है. Well, if we talk about other options like option 1 mainframe जो है it is incorrect because ये जो computers हैं these are used for the large scale data processing. Then option 2 सुपर कंप्यूटर जो है इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट है बिकॉज जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर द साइंटिफिक सिमुलेशंस, वेदर मॉडलिंग एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. एंड ऑप्शन 4 नोटबुक कंप्यूटर जो है इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट है बिकॉज जो नोटबुक कंप्यूटर्स है दीज आर बेसिकली द जनरल पर्पस पोर्टेबल डिवाइसेज जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द पर्सनल कंप्यूटिंग. हेंस जो ऑप्शन 3 है दैट इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not true about computer files? Your options are 1 they are collection of data saved to a storage medium, 2 every file has a name, 3 a file extension is established by the user to indicate the file's content, and 4 files usually contain data. The correct answer is option 3 a file extension is established by the user to indicate the file's content. Explanation. फाइल एक्सटेंशंस जो है लाइक .txt, .gpg, .docs
.pdf. These are not usually created by the user, but rather by the software or operating system that saves the file, जो कि help करते हैं basically computers को to identify the file type and the application that should open it by default. However, जो users हैं, they can also rename or they can change the extension, but by doing so, it cannot actually change the file's format. ठीक है? While other three options जो हैं, that are true about the computer files. Hence जो हमारा option 3 है, that is correct answer. Now next question. All of the following are the examples of real security and privacy risks except. Your options are 1. Hackers, 2. Spam, 3. Viruses, and 4. Identity theft. The correct answer is option 2. Spam. Let's explanation. If we talk about option 1, hackers जो है, it is basically an example of real security and privacy risk, because जो hackers है, these are the individuals who tries to gain unauthorized access to the computer system और network, जो कि steal करते हैं या जो कि alter destroy करते हैं data को, और जो कि also compromise करते हैं security को. While option 2 जो है spam, it is not an example of real security and privacy risk, because these are basically the unsolicited messages that are usually annoying, but they are not always harmful, and it becomes risky if it carries phishing links or malware attachments. Okay. Then option 3, viruses जो है, it is also an example of real security and privacy risk, because जो viruses हैं, these are the malicious softwares जो कि स्प्रेड होते हैं ऑटोमेटिकली और जो कि डैमेज करते हैं फाइल्स एंड सिस्टम्स को, दैट कॉजेज डेटा करप्शन, सिस्टम क्रैशेस एंड प्राइवेसी लीक्स. एंड ऑप्शन 4, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल बिकॉज इट रेफर्स टू स्टीलिंग पर्सनल डेटा लाइक बैंक डिटेल्स और अदर इन्फो फॉर द फ्रॉड, विच इज ऑल्सो ए डायरेक्ट थ्रेट टू बोथ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. हैंस जो हमारा ऑप्शन 2 है, दैट इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउ you to use your finger, eye or voice print to secure your information resources? Your options are 1. Haptics, 2. Cables, 3. Biometrics, and 4. RFID. The correct answer is option 3. Biometrics. Explanation. जो बायोमेट्रिक्स है, इट इज़ ए सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जो कि आइडेंटिफाई और जो कि ऑथेंटिकेट करता है इंडिविजुअल्स को बेस्ड ऑन देयर यूनिक बायोलॉजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज इंक्लूड फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और रेटिनल पैटर्न्स, वॉइस रिकॉग्निशन, फेशियल रिकॉग्निशन एंड हैंड ज्योमेट्री. एंड इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन सिक्योर एक्सेस सिस्टम, मोबाइल डिवाइसेस एंड ऑथेंटिकेशन फॉर डिजिटल सर्विसेज, जो कि ऑफर करते हैं हायर एक्यूरेसी एंड कन्वीनियंस कंपेयर टू पासवर्ड और पिन्स. ठीक है. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 1, हैप्टिक्स जो है, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो हैप्टिक है, इट इंक्लूड्स टच और टैक्टाइल फीडबैक, जिसको मेनली यूज़ किया जाता है इन द वर्चुअल रियलिटी एंड गेमिंग rather than for identity verification. Then option 2, cave जो है, that is cave automatic virtual environment, it is also incorrect because it is a virtual reality system जिसको यूज़ किया जाता है for projections on walls for immersive visualization. And option 4, RFID जो है, that is radio frequency identification, it is also incorrect because ये जो टेक्नोलॉजी है, it uses radio waves to identify टैग्ड ऑब्जेक्ट्स और कार्ड्स जो कि ऑथेंटिकेट करता है डिवाइसेस और आइटम्स को रादर दैन पीपल्स बायोलॉजिकल ट्रेट्स. हैंस जो हमारा ऑप्शन 3 है, दैट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी इज, योर ऑप्शंस आर 1. रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2. रैंडम ओनली मेमोरी, 3. सीरियल एक्सेस मेमोरी एंड 4. स्टोरेज मेमोरी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, रैंडम एक्सेस मेमोरी. एक्सप्लेनेशन. मेन मेमोरी रैम जो है, इट इज़ प्राइमरी वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, जो कि टेम्परली स्टोर करते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, जो कि CPU यूज़ करता है वाइल परफॉर्मिंग टास्क्स. एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वोलेटाइल और टेम्परेरी स्टोरेज, जो कि ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं फास्टर एक्सेस. हैंस जो हमारा ऑप्शन 1 है, दैट इज़ करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the smallest and fastest computer imitating brain working is, your options are 1. Supercomputer, 2. Quantum computer, 3. Param 1000
and 4 IBM chips. The correct answer is option 2, quantum computer. Explanation. क्वांटम कंप्यूटर जो है इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ कंप्यूटर जो कि यूज़ करता है क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स इन स्टीड ऑफ क्लासिकल बिट्स। एंड ये जो क्यूबिट्स है इनको रिप्रेजेंट किया जाता है इन बोथ 0 and 1s साइमल्टेनियसली ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन। एंड ये जो क्यूबिट्स है दे कैन बी ऑल्सो एंटेंगल्ड जो कि एलो करता है मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग एंड फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग और दी सर्टेन टास्क्स। ठीक है। Well, if we talk about other options like option 1 supercomputers है it is incorrect because जो supercomputers हैं these are the classical systems जो कि यूज़ करते हैं thousands of processors जो कि हमें extremely powerful देखने को मिलते हैं but they are not based on the quantum or brain like principles. Then option 3 Param 1000 जो है it is also incorrect because it is basically an Indian supercomputer from 1990s जिसको develop किया by the CDAC and ये हमें हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं बट इट्स नॉट रिलेटेड टू द ब्रेन लाइक और क्वांटम कंप्यूटिंग। एंड ऑप्शन 4 IBM चिप्स जो है इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट जनरल टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द हार्डवेयर कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स एंड IBM जो है इट डज क्रिएट क्वांटम चिप्स और न्यूरोमॉर्फिक चिप्स विच इज़ बेसिकली अ कंपनी रादर देन अ कंप्यूटर। हैंस जो ऑप्शन 2 है दैट इज़ करेक्ट। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। A compact disk is which type of data storage? Your options are 1 magnetic, 2 optical, 3 electrical and 4 electromechanical. The correct answer is option 2 optical. Explanation. Compact disks जो है they store information by using optical technology जहाँ data जो है उसको encode किया जाता है as tiny bits and lands on the disk surface. And laser beams जो है they read these patterns by detecting how light reflects differently from the bits and lands. And reflected light variations जो है उनको convert किया जाता है into digital binary data zeros and ones. And ये जो method है reading and writing का it use light और opticals जो कि define करते हैं optical storage को। ठीक है। Let's also talk about other options. Like option 1 magnetic storage जो है it is incorrect because जो magnetic storage है it stores data by magnetizing specific areas of a surface like hard drives, floppy disks etc. जहाँ laser और optical reading जो है that is not involved. Then option 3 electrical जो है it is also incorrect because it basically stores data by using electrical charges in semiconductor memory like RAM, flash drives, SSDs etc. एंड ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज जो है इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ ए डिवाइस जो कि कंबाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स को लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड CDs को। हैंस जो हमारा ऑप्शन 2 है दैट इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? योर ऑप्शंस आर 1 विंडोज, 2 पास्कल, 3 बेसिक एंड 4 कोबाल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 विंडोज। एक्सप्लेनेशन। एज यू नो जो विंडोज़ है इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप किया है बाय माइक्रोसॉफ्ट जो कि मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को एंड जो कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। एंड जो विंडोज़ है इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है। Let's also talk about other options like option 2 Pascal जो है it is incorrect because जो Pascal है it is a structured procedural programming language जिसको डेवलप किया by Nicholas Roeth एंड इसको commonly यूज़ किया जाता है for teaching programming and developing system softwares. Then option 3 Basic जो है that is beginners all purpose symbolic instruction code it is also incorrect बिकॉज इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर द बिगनर्स टू लर्न प्रोग्रामिंग विथ ईजी सिंटैक्स एंड इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन द अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स। एंड ऑप्शन 4 कोबाल जो है इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज जो कोबाल है इसको डेवलप किया गया है फॉर बिजनेस एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन जिसको स्टिल यूज़ किया जाता है इन बैंकिंग एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स टुडे। Hence, जो हमारा ऑप्शन 1 है that is correct answer. Let's see next question. First computer mouse was built by, your options are 1 Douglas Engelbart, 2 William English, 3 O'Neill Cougar and 4 Robert Zawadzki.
The correct answer is option 1, Douglas Engelbart. Explanation. First computer mouse जो है that was built by Douglas Engelbart with an assistance of William English. Actually जो Douglas Engelbart है, he conceived the idea of an input device that that could move the cursor on the screen to select or to manipulate data. And he worked at the Stanford Research Institute in the early 1960s. And William English जो है who was an Engelbart's colleague and chief engineer, he built the first working prototype of mouse in the year 1964. Hence जो हमारा option 1 है that is correct. Next question. Java language was developed by your officer 1 Ada Bryan, 2 Bill Gates, 3 Blaise Pascal, and 4 James Gosling. The correct answer is option 4, James Gosling. Explanation. Java programming language जो है it was developed by James Gosling at Sun Microsystems, जिसको later own किया by Oracle Corporation, and इसको रिलीज किया गया in the year 1995. Hence जो option 4 है that is correct. Let's see next question. Which of the following is not one of the 4 major data processing functions of a computer? Your options are 1, gather data, 2, process data into information, 3, analyzing the data or information, and 4, storing the data or information. The correct answer is option 3, analyzing the data or information. Explanation. जो 4 major data processing functions है of computer that are input, processing, storage and output. While जो data analysis है, it is also important computer function, but it actually falls under the broader processing category because it includes manipulating and interpreting the input data to generate meaningful insights, which is precisely what processing means. The correct answer is hence option 3. Now next question. When you connect to this service, your computer is communicating with a server at your internet service provider. What does it refer? Your options are 1, modem, 2, internet, 3, intranet, and 4, server. The correct answer is option 2, internet. Explanation. When we want to connect to the internet, जो हमारा कंप्यूटर है that connects through a server that is operated by the internet service provider. And ये जो internet service provider है, this acts as a gateway to route your requests like visiting websites or streaming videos to the other servers around the world and return the results to your device. ठीक है. Let's also talk about other options. Like option 1, modem जो है is incorrect because you know जो modem है is a hardware rather than a network or service, and इसकी जो job है that is to modulate and demodulate signals so that your computer है that can send and receive data over telephone, cable or fiber lines. Then option 3, intranet जो है it is also incorrect because intranet जो है it is a private internal network जिसको use किया जाता है within any organization which also use internet technologies like TCP, IP, which is not related to the global internet. And option 4, server जो है it is also incorrect because जो server है it is a computer जो कि प्रोवाइड करता है डेटा एंड सर्विसेज लाइक वेब पेज और ईमेल्स, और ये जो सर्वर्स है these are the part of internet rather than internet itself. Hence जो option 2 है that is correct. Now let's see next question. A collection of related files is called a, your options are 1, character, 2, field, 3, database, and 4, record. The correct answer is option 3, database. Explanation. Database जो है it is an organized collection of related data जिसको electronically store किया जाता है and इसको manage करता है database management system. And database जो है it contains multiple tables and each table जो है that stores data about a specific entity like customers, orders or products. और ये जो tables हैं these tables are linked through relationships like primary or foreign keys. And जो database है it allow users for efficient storage, retrieval and manipulation of large amounts of data, which makes them essential for applications ranging from banking system to websites. Hence जो option 3 है that is correct. Now let's proceed to next question. Hard disk drives and CD drives are examples of, your options are 1, backup,
2 storing, 3 storage, and 4 all of these. The correct answer is option 3 storage. Explanation. हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड CD ड्राइव्स जो है these are the examples of storage devices and इनकी जो प्राइमरी फंक्शन है that is to store data permanently or semi permanently for later retrieval and use, and they fall under the broader category of secondary storage as opposed to primary memory like RAM, which is a volatile and temporary storage. ठीक है. Let's also talk about other options like option 1 backup जो है is incorrect because जो backup है it refers to process of creating a copy of data for safe keeping. However, जो hard disks या जो CDs हैं they can be also used for backup, but जो term storage device है it is a noun that is used for such purpose. And option 4 all of these जो है is also incorrect because जो HDDs and CDs हैं that are used for backup and storing data. So उनकी जो प्राइमरी फंक्शन है और इनकी जो कैटेगरी है दैट इज स्टोरेज. हेंस जो ऑप्शन 3 है दैट इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. You would use dash software to create spreadsheets, type documents, and edit photos. Your options are 1 application, 2 utility, 3 system, and 4 operating system. The correct answer is option 1 application software. Explanation. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इनको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प यूजर्स सो दैट दे कैन परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क्स और दे कैन सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. एंड ये जो प्रोग्राम्स है दीज प्रोग्राम्स एनेबल प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी बाय प्रोवाइडिंग टूल्स टेलर्ड टू certain activities like MS Word, Google Docs जो है these are used for creating and editing documents. Similarly MS Excel, Google Sheets जो है इनको यूज़ किया जाता है for performing calculations and manipulating data, and spreadsheets, Adobe Photoshop, and GIMP जो है these are used for the image creation and editing. Similarly MS PowerPoint, Canva जो है these are used for making presentations. ठीक है. Let's also see why the options are incorrect. Like option 2 utility software जो है it is incorrect because it basically help users in maintaining, managing, and optimizing the computer system like antivirus softwares, disk cleanup tools, and backup utilities. Then option 3 system software जो है it is also incorrect because ये जो softwares हैं these softwares control and manage hardware components and other system operations, which includes the operating system and device drivers like Windows, Mac OS, and Linux. Then option 4 operating system जो है is also incorrect because जो operating system है it manages hardware and software resources along with the user interaction. Hence जो option 1 है that is correct. Now let us discuss next question. Which of the following is a computer that supports hundreds or thousands of users simultaneously? Your options are 1 super, 2 macro, 3 mini, and 4 mainframe. The correct answer is option 4 mainframe. Explanation. मेन-फ्रेम कंप्यूटर्स हैं जो है दीज आर दी लार्ज पावरफुल सिस्टम्स जो कि हैंडल करते हैं मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा और जो कि सपोर्ट करते हैं मनी यूजर्स को एट ए टाइम. एंड जो कंप्यूटर्स हैं दीज कंप्यूटर्स एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज स्पेशली फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट एंड एयरलाइंस, जहाँ रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड जो है दैट इज़ क्रूशियल. एंड इसकी जो की फंक्शंस है दैट आर ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं दे प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड और जो कि आल्सो मैनेज करते हैं लार्ज स्केल एंटरप्राइज डेटाबेस को एंड जो कि आल्सो रन करता है मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूस अप टाइम. ठीक है. लेट्स आल्सो सी व्हाई देयर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. लाइक ऑप्शन 1 सुपर कंप्यूटर जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो सुपर कंप्यूटर्स हैं इनको यूज़ किया जाता है फॉर साइंटिफिक सिमुलेशन, रिसर्च एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस स्पेशली फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एक्स्ट्रा. देन ऑप्शन 2 माइक्रो कंप्यूटर्स जो है इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ नॉट एनी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी इन कंप्यूटिंग एंड ये जो टर्म है दिस टर्म रेफर्स टू ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस रादर देन फॉर दैट इज़ यूज्ड फॉर हार्डवेयर क्लासिफिकेशन. And option 3 mini computers जो है it is also incorrect because these are the smaller or less powerful than mainframe computers that are basically used by the medium-sized businesses for departmental or for laboratory work. Hence जो option 4 है that is correct. Now let us discuss another question. Which device is a microprocessor based computing device? Your options are 1 personal computing, 2 mainframe, 3 workstation, and 4 server.
The correct answer is option 1, personal computer. Explanation. Microprocessors जो है, these are basically the core processing units of modern small computer systems, especially the brains of computer that are contained on a single integrated circuit, जो कि परफॉर्म करते हैं सभी essential arithmetic logic and control operations that are required for running application. और जो बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम की, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। एंड ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इनको स्पेसिफिकली बिल्ड किया गया है अराउंड द सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लाइक इंटेल कोर और AMD राइजन। एंड इसके जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं दे हैंडल ऑल कंप्यूटेशन लॉजिक एंड कंट्रोल टास्क्स विच मेक्स इट बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। हैंस जो ऑप्शन 1 है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन. An email account includes a storage area often called as, your options are 1 attachment, 2 hyperlink, 3 mailbox and 4 IP address. The correct answer is option 3 mailbox. Explanation. ईमेल अकाउंट जो है इट इंक्लूड्स डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस ऑन मेल सर्वर जहाँ इनकमिंग और जो आउटगोइंग मैसेजेस हैं दैट आर सेव्ड और स्टोर्ड। एंड ये जो प्लेस है दिस प्लेस इज कॉल्ड एज मेल बॉक्स, जो कि स्टोर करते हैं रिसीव्ड मैसेजेस, सेंट ईमेल्स, ड्राफ्ट्स एंड आल्सो दिस स्पैम्स। एंड ये जो storage area है it allow users to access their emails anytime from different devices through email clients or through web mail interfaces. ठीक है. Let's also talk about other options like option 1 attachment जो है it is incorrect because जो attachment है it is a file that is sent through an email like document, image or PDF. Then option 2 hyperlink जो है it is also incorrect because जो hyperlink है you know it is a clickable element that leads to the web page or another source. And option 4 IP address जो है it's also incorrect because जो IP address है it identifies a device or server on a network. Hence जो option 3 है that is correct. The next question. Data becomes dash dash when it is presented in a format that people can understand and use it. As we had discussed it, I think you can solve this. Your options are 1 process it, 2 graphs, 3 information and 4 presentation. The correct answer is option 3 information. Explanation. Data जो है it basically includes raw facts and figures without any content or meaning. एंड वन जो डेटा है रॉ डेटा है उसको प्रोसेस ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर किया जाता है इट बिकम्स इंफॉर्मेशन जिसको फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर द डिसीजन मेकिंग। है ना, जो ऑप्शन 3 है दैट इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन. A set of computer programmers that helps a computer monitor itself and function more effectively is an, your options are 1 Windows, 2 system software, 3 DBMS and 4 application software. The correct answer is option 2 system software. Explanation. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इट इज़ ए फाउंडेशनल सॉफ्टवेयर जो कि मैनेज कंट्रोल करता है हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को सो दैट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट कैन परफॉर्म देयर ओन functions. And system software जो है it acts as an interface between the user application and hardware. एंड जो मेन टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के दैट आर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज को लाइक विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एक्स्ट्रा. देन यूटिलिटी प्रोग्रामर्स जो कि सपोर्ट और जो कि मेंटेन करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस को लाइक एंटीवायरस, डिस्क क्लीन अप टूल्स, बैकअप यूटिलिटीज एक्स्ट्रा. देन डिवाइस ड्राइवर्स जो कि अलो करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस. हैंस जो ऑप्शन 2 है दैट इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A dash dash converts all the statements in a program in a single batch and the resulting collection of instructions is placed in a new file. As we had discussed it, and I think you can also solve this. Here your options are 1 converter, 2 compiler, 3 interpreter and 4 instruction. The correct answer is option 2 compiler. Explanation. जो कंपाइलर है इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि कन्वर्ट करता है एंटायर सोर्स प्रोग्राम को दैट इज रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड और ऑब्जेक्टिव कोड इन ए सिंगल स्टेप. एंड वंस कंप्लीटेड जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है दैट कैन रन विदाउट रिकम्पाइलिंग अनलेस द सोर्स कोड चेंजेस. हैंस जो ऑप्शन 2 है दैट इज करेक्ट. नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. द एडवांटेजेस ऑफ IoT इज आर, योर ऑप्शंस आर 1 टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन, 2 इम्प्रूव डेटा कलेक्शन, 3 reduced waste and 4 all of these.
The correct answer is option 4, all of the above. Explanation. If we talk about option 1, technical optimization, it is an advantage of IoT because it enables real-time monitoring and control of devices and system, which further leads to the improved efficiency, productive maintenance and reduced downtime. Then option 2, improved data collection जो है, it is also an advantage of IoT because जो IoT devices है, they continuously gather large amounts of accurate real time data, and ये जो data है, this data supports data driven decisions, trend analysis and also automation. And option 3, reduced waste जो है, it is also an disadvantage because through automation and precise control जो IoT devices हैं, they minimize resource wastage like energy, water, materials, etc. Hence all listed options जो है, they are correct. Now let's see next question. Which of the following is not a broadband communication medium? Your options are 1, microwave, 2, fiber optic cable, 3, twisted pair, and 4, coaxial cable. The correct answer is option 3, twisted pair. Explanation. ब्रॉडबैंड जो है रेफर्स टू हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिशन जो कि कैरी करते हैं मल्टीपल सिग्नल्स को लाइक वॉइस, वीडियो एंड डेटा को साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, जो कि प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूस इंटरनेट एक्सेस एंड दैट आल्सो हैज़ ए हायर डेटा रेट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल नैरो बैंड डायल अप सिस्टम्स. ठीक है. वेल इफ यू टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 1, माइक्रोवेव जो है, इट इज़ incorrect because जो microwave है, it is a broadband communication medium because it uses high frequency radio waves for the long distance data transmission, which is mainly common in satellite and cellular networks. Then option 2, fiber optic जो है, it is also a broadband medium because it transmits data as light waves through glass fibers and it also has a higher bandwidth speed. Then option 4, coaxial cable जो है, is also a broadband medium because इसको यूज़ किया जाता है फॉर टीवी एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो कि आल्सो सपोर्ट करते हैं हायर बैंडविड्थ को. एंड वाइल ऑप्शन 3 जो है, ट्विस्टेड पेयर, इट इज़ नॉट ए ब्रॉडबैंड मीडियम बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर एंड ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता था फॉर टेलीफोनी एंड इसको इसकी जो बैंडविड्थ है दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड. हैंस जो ऑप्शन 3 है दैट इज़ करेक्ट. Now next question, which of the following performs modulation and demodulation? Your options are 1, coaxial cable, 2, satellite, 3, modem and 4, optical fiber. The correct answer is option 3, modem. Explanation. modem जो है, it is the hardware communication device जो कि allow करता है computers को to send and receive data over analog communication channels such as through telephone और cable lines. and इसकी जो functions है that are modulation जो कि कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर एनालॉग लाइन्स, एंड डीमॉड्यूलेशन जो कि आल्सो कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स को बैक इनटू डिजिटल फॉर्म जो कि कंप्यूटर फर्दर प्रोसेस करता है. हेंस जो ऑप्शन 3 है दैट इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, योर ऑप्शंस आर 1, abacus, 2, difference engine, 3, clock and 4, Pascal line. The correct answer is option 1, abacus. Explanation. Abacus जो है, it is a manual calculating tool or device that use beads moved along with rods or wires to perform arithmetic operations. and इसको originate किया गया around 2700 to 2300 BC in Mesopotamia, which makes it one of the oldest tool for calculation and इसको widely use किया जाता था in ancient civilizations like in China, Greece, Rome and Egypt for trade and commerce. and जो option 1 है that is correct. Next question. The function of escape key is, your options are 1, to end the action, 2, to go to last action, 3, to repeat the last action and 4, to begin the action. The correct answer is option 1, to end the action. Explanation. जो मेन फंक्शन है एस्केप की दैट इज टू एंड कैंसिल और इंटरप्ट द करंट ऑपरेशन दैट कैंसिल द एक्शंस दैट स्टॉप्स प्रोसेस एंड दैट आल्सो एग्जिट फुल स्क्रीन मोड एंड दैट आल्सो इंटरप्ट कमांड्स. सो एस्केप की जो है इसको यूज़ किया जाता है टू इंटरप्ट और टू टर्मिनेट द करंट प्रोसेस टू रिटर्न द सिस्टम टू ए प्रीवियस स्टेट विच मेक्स इट क्विक वे टू कैंसिल और एस्केप फ्रॉम अनवांटेड ऑपरेशन. एंड जो ऑप्शन 1 है दैट इज करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
This device is usually used for protection, safety, and even investigation. Your options are 1. Drone camera, 2. Spy pen, 3. Tablet, and 4. All of these. The correct answer is option 2. Spy pen. Explanation. स्पाई पेन जो है इट इज़ एन IoT डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए नॉर्मल पेन जो कि कॉवर्टली सीक्रेटली रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो वीडियो और दैट आल्सो टेक्स पिक्चर्स एंड इसको मेनली यूज किया जाता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पजेस. हैंस जो ऑप्शन 1 है दैट इज करेक्ट. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. The memory size in mainframe computers and advanced technology microcomputers are expressed as your options are 1 bytes, 2 kilobytes, 3 bits, and 4 megabytes. The correct answer is option 4 megabytes. Explanation. Mainframe computers और जो advanced microcomputers हैं they have a large memory capacities and earlier systems जो हैं they mainly use bytes and kilobytes but with new advancements जो memory sizes हैं that has grew up to megabytes, gigabytes and even terabytes. Nowadays जो mainframe कैपेसिटी है उसको मेजर किया जाता है इन टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स एंड पर्सनल कंप्यूटर जो है दे कॉमनली हैव GBs ऑफ रैम एंड TBs ऑफ स्टोरेज. हैंस जो ऑप्शन 4 है दैट इज करेक्ट. नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन. कंप्यूटर वायरस इज योर ऑप्शंस आर 1 हार्डवेयर, 2 विंडो टूल, 3 computer program and 4 a system software. The correct answer is option 3 a computer program. Explanation. Computer virus जो है it is a malicious software or malware which is basically a computer program or set of instructions that are basically designed to infect computers जो कि replicate spread होते हैं itself and that spreads through other systems to cause harm. Hence जो option 3 है that is correct. Now let us see next question. Each model of a computer has a unique. Your options are 1 assembly language, 2 machine language, 3 high level language and 4 all of the above. The correct answer is option 2 machine language. Explanation. Machine language जो है it is the lowest level programming language which is basically made up of binary digits, zeros and फंस जो कि कंप्यूटर CPU डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं एंड ईच कंप्यूटर मॉडल जो होता है उसका हमें ओन यूनिक मशीन लैंग्वेज देखने को मिलती है दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस हार्डवेयर आर्किटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन सेट. ठीक है. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस लाइक ऑप्शन 1 असेंबली लैंग्वेज जो है इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज जो असेंबली लैंग्वेज है इट यूजेस सिम्बॉलिक कोड और निमोनिक्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी विच मेक्स इट ईजी टू रीड and it is also specific to the architecture rather than to the every individual model. Then option 2 high level language है it's also incorrect because जो high level language है it is a platform independent language जो कि run करते हैं same programs और on many systems after compilation or interpretation. And option 4 all of the above जो है it's also incorrect because on the machine language जो है that is directly executed and that is also unique to each CPU model. Hence जो option 2 है that is correct. Now next question. A website is a collection of your options are 1 graphics, 2 programs, 3 algorithms and 4 web pages. The correct answer is option 4 web pages. Explanation. Website जो है it is a collection of related web pages that are interlinked or that are organized under a single domain name. और ये जो pages हैं these pages are stored and organized under a single domain name. सॉरी ये जो पेजेस हैं इनको स्टोर किया जाता है ऑन द वेब सर्वर एंड इट इंक्लूड्स various types of content such as text, images, audios, videos, hyperlinks and interactive features. And each पेज जो होता है एक पर्टिकुलर वेबसाइट का दैट इज टिपिकली रिटन इन HTML दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इसको एक्सेस किया जा सकता है थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब बाय यूजिंग वेब ब्राउजर. हैंस जो ऑप्शन 4 है दैट इज करेक्ट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. To move the cursor to the end of the document, press your options are 1 Ctrl plus Escape, 2 Ctrl plus End, 3 Ctrl plus B and 4 Ctrl plus C. The correct answer is option 2 Ctrl plus End. Explanation. By pressing Ctrl plus End, it moves cursor directly to the end of the document in most text-based editors and word processors like in MS Word, Notepad or Google Docs. ठीक है.
Let's also see why other options are incorrect. Like option 1 control plus escape जो है it is incorrect because जो shortcut key है it opens the start menu in Windows which does not affect the text navigation. Then option 3 control plus B जो है it is also incorrect because जो shortcut key है it applies or it removes the bold formatting to the selected text. And option 4 control plus C जो है it is also incorrect because जो shortcut है it copies the selected text or object to the clipboard. Hence जो option 2 है that is correct. Now let's proceed to another question. The question is the shortcut method to print document is, your options are 1 control plus A, 2 control plus B, 3 control plus P, and 4 control plus C. The correct answer is option 3 control plus P. Explanation: by pressing Ctrl plus P, it opens the print dialog box in most applications such as in MS Word, Excel, browsers, or PDF. And from there, you can also choose your printer. You can also set print options and you can also print the current document or page. Okay. Let's also talk about other options like option 1 control plus A जो है it is incorrect because ये जो shortcut है इसको use किया जाता है to select all the contents in the current document window or field. Then option 2 control plus B जो है it is also incorrect because जो shortcut है it toggles bold formatting on or off for the selected text. And option 3 control plus C जो है it is also incorrect because जो shortcut है it copies the selected text file or object to the clipboard. Hence जो option 4 है that is correct. Next question: viruses, Trojan horses, and worms are, your options are 1 able to harm computer system, 2 unable to detect if affected on computer, 3 user friendly applications, and 4 harmless applications resident on computer. The correct answer is option 1 able to harm computer. Explanation: viruses, worms, or Trojan horses जो हैं these are all the forms of malware or software that are created with the bad intent in order to cause harm, disrupt, or to gain unauthorized access to the computer systems. And other options जो हैं they are incorrect. Hence जो option 1 है that is our correct answer. Next question: which of the following is used to browse internet? Your options are 1 Skype, 2 Facebook, 3 Google, and 4 Firefox. The correct answer is option 4 Firefox. Explanation: Mozilla Firefox जो है it is a web browser which is a software application जो कि allow करते हैं users को to access, retrieve, and to view content on the world wide web such as websites, videos, images. And जब हम टाइप करते हैं web address or URL into Firefox, it communicates with the web server that hosts the website and it displays the web page on the screen. And you might confuse it with the Google, पर जो Google है is a search engine और हम जनरली यूज़ करते हैं वेब ब्राउज़र को टू एक्सेस गूगल सर्च इंजन. देन हम यूज़ करते हैं सर्च रिजल्ट्स को टू नेविगेट वेबसाइट्स. सो इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ ब्राउज़र. हैंस जो हमारा ऑप्शन 4 है दैट इज़ करेक्ट. नाउ लेट अस डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. द क्वेश्चन इज इंटरनेट बैंकिंग इज डन ओवर, योर ऑप्शंस आर 1 इंटरनेट, 2 मोबाइल, 3 लैपटॉप, and 4 computer. The correct answer is option 1 internet. Explanation: इंटरनेट बैंकिंग जो है इट ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग और ई बैंकिंग जो कि अलाउ करता है यूजर्स को टू परफॉर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टू मैनेज देयर अकाउंट्स थ्रू बैंक सिक्योर वेबसाइट और ऐप. वो जो कोर टेक्नोलॉजी है दैट मेक्स दिस पॉसिबल दैट इज़ इंटरनेट जो कि एक्ट करता है एज ए कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि कनेक्ट करता है आपकी डिवाइस को टू द बैंक सर्वर्स. और हम जनरली यूज़ करते हैं डिवाइसेस को लाइक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जो कि कनेक्ट करता है टू द बैंक्स वेबसाइट और ऐप थ्रू द इंटरनेट. हैंस जो ऑप्शन 1 है दैट इज़ अवर करेक्ट आंसर. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए या आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन दिस email. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like, and subscribe to Discipline Dark channel. Thank you for watching.